हेलो। The promise is an instant loan. The reality is a nightmare. सर, हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। The BBC can reveal that in the last 3 years, more than 60 Indians have taken their own lives after being abused or blackmailed by loan apps. मैंने कोशिश ज़रूर किया मरने के लिए। मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। BBC Eye goes undercover to show you the scam that's plaguing India. And to expose the people making money from misery, fear, and shame. 这是我们会拿到的很多信息的，基本上你可以这么理解，他的在我面前是裸体的。ये एक ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप। This is how the trap is set. You get a message saying you have been approved for an instant loan. All you have to do is download the app, accept the terms and conditions, and the money is yours. What you don't know is you're already in the trap. The app is extracting all your personal information, your ID cards, your photos, the names and numbers of your family, your colleagues, your friends. That's when the extortion begins. My name is Poonam Agrawal. I'm an investigative reporter. Last year, I began to hear stories about people scammed by loan apps. Most victims are too ashamed to talk. But one, Bhumi Sinha, was brave enough to tell me her story. मुझे एक पेमेंट आनी थी और आया नहीं था एंड आई टू जनरली मेक कुछ अर्जेंट पेमेंट्स करने थे। एक 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते। उनकी एक लेडी थी जिन्होंने स्टार्ट किया बोलने का कि अगर आपने पे नहीं किया ना इमीडिएटली हम आपके कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करेंगे। Bhumi moved from loan app to loan app, borrowing one loan to pay another, often getting 30 or 40 calls a day. Eventually, she paid them off. But one app, Asan Loan, kept calling. ऑफिस में मैं थी एक्चुअली। एक कलीग अकाउंटेंट है, उन्होंने मुझे बुलाया, बोलते भूमि ज़रा कैबिन में आना तुम। तो बोल रहे ये मुझे व्हाट्सएप पे आया। उन्होंने जैसे वो फ़ोटोग्राफ्स मुझे दिखाए मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गई। आसान लोन का कोई एक बंदा ने उसको मैसेज भेजा था जिसमें मुझे टोटली नूड नेकेड दिखाकर, मतलब इट वाज अ मॉर्फ फोटोग्राफ था। Asan Loan had photoshopped Bhumi's face onto this porn image and sent it to every contact on her phone. मेरी बेबी को कॉल किया, मेरी डॉटर को अब्यूज़ किया, उसको मेरे नूड फोटोग्राफ्स भेजे। जो लोग मेरे डैड को पहचानते थे सारे के सारे, उनको तक वो फोटोग्राफ्स गए। मैंने कोशिश ज़रूर किया मरने के लिए, हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी बच्ची है। मैं गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा। मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। It had been hard to find a victim willing to talk. It was even harder to find a perpetrator. Eventually, though,
I got in touch with a young guy who had worked recovering money for loan apps. I asked Rohan, not his real name, to tell me how the scam works. इतनी गाली कि अपनी बहन को बेच दे, अगर पैसा नहीं है तो अपनी बहन को बेच दे कोठे में। रिकवरी का काम मुझे शुरू से अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पैसा इतना ज़्यादा था कि मैं करता रहा। फिर ये सब गंदा काम चालू हुआ, फोटो मॉर्फ करना। मुझे नहीं करना था ये सब, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बहुत लोग कहते थे सुसाइड कर लूँगा जब उनके पास पैसे नहीं होते थे। मतलब इतना डर डाल देते हैं लोगों में? डर नहीं, शर्म। इंडिया में शर्म बहुत काम आती है। To expose the scam, I needed evidence. So I asked Rohan to wear a secret camera and take us inside a call center. Within weeks, Rohan had landed a job at the Callflex Corporation, which recovers money for loan apps, including one called PaySense. Most calls are polite. But if you don't pay on time, things start to get nasty. Rohan's new colleagues were brazen about the tactics they used. हम लोग ऐसा सा गाली देते जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, काम से फोन निकल जाए सुन के। और हमारे प्रोफेशन में तो भैया गालियाँ यहाँ होती है, हमारे लिए गालियाँ। 52,000 का लोन लिया, 52,000 का देना। छोड़ने का पैसे पूरा कितना है हमारे पास, पूरा सब कुछ है। While Rohan was undercover, I was still trying to find out who had harassed Bhumi to the brink of suicide. We had heard that many of these apps are owned by Chinese investors, but we could find no name or address. The app just said Asan Loan. Eventually, we found the developer behind the app, DK Sky Tech. It had a listing in the corporate register. There, I found a name for the man running Asan Loan, Parshuram Takwe. Facing criminal charges for extortion, Takwe had vanished. But in Pune, I found someone who used to work for him. तो उसको हमने खुद ने सुना था, गाली देते हो, गाली गलौज करते हो, ये सब सुना था हमने। तो वो भी बोलने का मैं खुद करा तो तुम क्यों डर रहे हो? कस्टमर हमें भी बोलने का मैं सुसाइड करूंगा तुम ऐसे करेंगे तो सुसाइड केसेस इतना बढ़ गए थे कि साउथ पूरा स्टॉप किया था उन्होंने। उसको अच्छे से पता था कि ये सुसाइड जो हुआ है उसके कॉल सेंटर से कॉल गया है, हैरेसमेंट हुआ है, उसके बाद उनको पता था क्योंकि वो भी न्यूज़ चैनल्स मोस्टली देखने के। It had been 3 weeks since Rohan began filming secretly inside the call center. हेलो, पता चला किस तरह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालते हैं कस्टमर के? सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हैं और फिर एजेंट्स को कहा जाता है उन्हें गाली देने के लिए। एजेंट कस्टमर से पैसे निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या एजेंट्स बदमाश है या उन्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए कहा जाता है? जो मैनेजर होता है उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं ये। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे गाली गलौज करनी है, कैसे हैरेसमेंट करनी है, किस तरह कॉल करनी है। तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? मैनेजमेंट देती है। जैसे इधर एक मैनेजर है विशाल चौरसिया, ये देता है ट्रेनिंग। अब मिलोगे उनसे? So Rohan arranged a meeting with this manager. He went with another undercover reporter posing as an investor. They asked Chaurasia to explain exactly how loan recovery works. किसी कस्टमर को लोन लेता है ना, उसके पूरी मोबाइल जो लिस्ट है ना कंपनी के पास होता है। इसमें अम्मा, अप्पा, बाप, भाई, भाभी, भतीजी, बाबू, सोना, बीवी, सबके नंबर होते हैं। जब कस्टमर बिल्कुल ही इस्तेमाल कर देता है ना, तब उनके रेफरेंस को कॉल लगाया जाता है। अच्छा, उनके मतलब पेरेंट्स के पास में या उसकी मदर के पास आया जाता है क्या? पैनिक। अच्छा,
कस्टमर फिर शर्म से पेमेंट करेगा। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक बंदा ऐसा मिलेगा जब आपको कि वो जिंदगी तबाह कर सकता है। The manager had distilled the scam to its essence. Call centers recover money for loan apps by threatening to destroy people's lives. Breaking news coming in when it comes to the crackdown on Chinese loan apps. That's our top focus on the bulletin. हैदराबाद सिटी पुलिस ने ये ऑनलाइन लोन एप्स का एक स्कैम बस्ट किया है। The Indian authorities were starting to crack down on the loan apps. In April 2022, Takwe was charged with extortion, intimidation, and abetment of suicide. By the end of the year, he was on the run. But Takwe wasn't working alone. Behind him, I found the scam extended far beyond India. Takwe, together with his Chinese wife, Liang Tian, ran 4 businesses. The largest, Jia Liang, recovered money for predatory loan apps. Some of those loan apps were set up or supported by 2 Chinese-owned companies. Behind both of them was a mysterious businessman called Li Jiang. Li Jiang kept himself well hidden. We found nothing online, no social media accounts and no photos. But the money trail led to one city, Hong Kong. Here, we found a phone number linked to one of his employees. Posing as investors, we asked if he could set up a meeting with Li Jiang. Li Jiang was quick to tell us about his fintech and loan app businesses in India. 然后我们目前是印度前3的一个行业地位。我们现在所有做的，在全世界来说都不是特别合规的，这个你要知道，因为你想回本快，而且利息都违反当地的法律。 Then Li Jiang made the key admission. His companies, controlled from Hong Kong, harvest Indians' contacts and exploit them to recover loans. 那比如说你不还钱，要不要加你 WhatsApp？ 包括第3天 WhatsApp 通知打你的通讯录，然后第4天如果通讯录不还的话怎么办？我们都会有一个特别详细的流程，也会在验证，还有他的通话记录，这是我们会拿他的很多信息的。 基本上你可以这么理解，他的在我面前是裸体的，我们都知道他是个什么维度的人。 Finally, we had a face for Li Jiang and evidence that he was profiting from the misery of ordinary people. Takwe used extortion, intimidation, and fear in order to recover money. At least some of that money ended up in the accounts of this man. Rohan, the insider, had helped expose how this industry really works. He had also faced up to his own past. हाँ, मैंने गलती जरूर की होगी। चिल्लाया होगा लोगों पर, डराया, धमकाया होगा लोगों को, हैरेसमेंट की होगी। लेकिन कुछ तो अच्छा करके जा रहा हूँ अब जिंदगी में। कोई इंसान अगर मुझे याद करेगा, तो इस काम के लिए कर लेगा। Rohan was out, but the scam continues. A year after Takwe went on the run, his app, Asan Loan, is still trading, still destroying lives. In Mumbai, though, Bhumi is starting to rebuild hers. रिग्रेट ये है कि आई शुड हैव टेकन इट, बट उस वक्त वो शायद इमरजेंसी ही नहीं आती तो शायद मैं नहीं लेती। अगर मैंने पहले कुछ बहुत अच्छा किया होगा ना तो मुझे ये बेटी मिली है, मेरी लाइफ लाइन है। अगर आज मैं कहीं ज़िंदा भी हूँ, आई थिंक वो मेरी बेटी की वजह से। वो अगर उस वक्त मेरे साथ नहीं खड़ी होती ना
शायद इतने सारे लोग जो मर गए लोन ऐप के जैसे, उनमें से एक मेरा भी नाम होता।